NASA, Axiom Space and as well as SpaceX are all set to launch the fourth private astronaut mission to the International Space Station. The space mission, in fact, has been termed as Axiom-4. The mission will launch from Launch Complex 39A at Kennedy Space Center, Florida, aboard a SpaceX Falcon 9 rocket carrying a New Dragon spacecraft. In fact, the crew is also due to dock with the ISS on Thursday, June 26th, where they will spend about 2 weeks or 14 days conducting science outreach as well as commercial activities. Big thing for India is we have an Indian on board, Shubhanshu Shukla. My parents are the hardest working people I knew. They taught me work ethic and never to quit. Peggy Whitson became the first female commander of the International Space Station. In her career, Whitson spent 675 days in space. She also flew 3 long-duration space flights and served as chief of the astronaut office and commander of the International Space Station. AX-4 will be her 5th mission to the International Space Station and 2nd time commanding a commercial astronaut mission. Peggy Whitson is a known name. She has accomplishments that I can only dream of. Peggy is one of the most capable leaders that I had the chance to work with, ever. She passes knowledge to us. She knows where we feel strong, where we feel maybe a bit weaker, and she can support us in that. Being a great leader for her is just natural. When I first met the crew, I was very excited by the fact that they could all laugh at themselves. I think that's a really important characteristic, to be able to have a sense of humor about yourself, not to take yourself so seriously. From there, you can do a lot of work. I actually tell the crew a lot about what I think they're going to experience. I think it helps them prepare. But I'm talking about how they're going to feel, how their body's going to react to it. Everybody's going to be souped up to do, 150% of the work. And so I want them to have an accurate sense of what they're going into as they adapt to being in space. My first flight was in 2002. Obviously, as a rookie flyer, I worried a lot about getting everything right. I didn't want to be the one that made mistakes. To me, it's important to be able to share that and relieve some of the stress off of them and try and focus their worry, because I know they are worried as well, on the right things. I've got 3 different countries being represented, and we prioritize each of their countries' objectives so that everyone's needs are being met. And this is a goal of Axiom, and that is to open up space and opportunities to more and more countries. I really consider it almost a dream that we have already accomplished 3 private astronaut missions in 3 years. So I'm really excited to be a part of that. I love working with these young engineers with new ideas. It's a lot of fun. I'm Peggy Whitson, commander of AX-4. I'm joined now by Axiom Space's Chief Strategy Officer, Matt Ondler. Matt, thanks for being here. Where else would you be, though? No, thanks for having me. This is a fantastic... All right. In fact, our team have also spoken to the parents as well as sisters of Shubhanshu Shukla. Let's take a look at that reaction also coming in. हम इस वक्त लखनऊ के उसी सीएमएस स्कूल के अंदर मौजूद हैं, जहां पर उन्होंने शिक्षा ली। हालांकि हम लोग कानपुर ब्रांच में हैं। उनकी माताजी हमारे साथ है। मैम, पूरा देश इस वक्त शुभांशु की तरफ देख रहा है, और जो शुभांशु को जानते हैं वो लखनऊ की तरफ देख रहे हैं, और जो लखनऊ को जानते हैं वो सीएमएस स्कूल की तरफ देख रहे हैं। और आप लोग सीएमएस स्कूल में, कितना गौरवशाली क्षण है उस माँ के लिए जिसने भारत के इस लाल को जन्म दिया है। सर, आप यहाँ जाइए। हमारे लिए तो बहुत ही गौरव का क्षण है। और हमारे साथ साथ सीएमएस वालों का जो है बहुत ज्यादा उसमें हाथ है। उस बच्चे को आगे बढ़ाने में सहायता सीएमएस वालों की भी रही है। बेटा जो होता है वो माँ के बड़ा करीब होता है, और आज इतिहास में नाम दर्ज करने जा रहे हैं शुभांशु, तो फिर क्या कहना चाहेंगी पूरे भारतवासियों के लिए? अच्छी बात है ये, बहुत हमारा बेटा नाम कमा रहा है। हम तो चाहते हैं और भी बच्चे आगे बढ़े, अपनी माओ का नाम रोशन करें, इसी तरह से आगे बढ़ते जाए सब बच्चे। हम तो यही। कोई हेजिटेशन आपके चेहरे पे मुझे नजर नहीं आ रही है, क्योंकि 140 करोड़ लोगों की दुआएं शुभांशु के साथ है। कोई चेहरे पे हेजिटेशन नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई डर नहीं मेरे मन में। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अंतिम बातचीत कब हुई आपसे?
आज सवेरे ही हुई थी बातचीत, आज सुबह बात हुई। फोन आया था या आपने किया था? नहीं नहीं, वही करता है फोन। निकलने के पहले उसने 2 बार फोन किया। अच्छा। कि मैं निकल रहा हूँ माँ, और गाड़ी में बैठूंगा फिर फोन करूंगा, तो फिर दोबारा फोन आया। अच्छा, वीडियो कॉल या ऑडियो कॉल? वीडियो कॉल। वीडियो कॉल। अच्छा, चेहरे पे वो जोश उत्साह आपको वीडियो कॉल पे नजर आया शुभांशु के? बहुत ज्यादा, बहुत एक्साइटिंग, बहुत एक्साइटेड। फैमिली कितनी एक्साइटेड है? फैमिली भी एक्साइटेड है। फैमिली भी एक्साइटेड है इस मूवमेंट को लेकर, बहुत ज्यादा एक्साइटेड। अच्छा शुभांशु, उन तमाम लोगों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। छोटे शहर या छोटे स्कूल में पढ़ के भी आप दुनिया में नाम कमा सकते हैं और इतिहास में नाम दर्ज करा सकते हैं उन तमाम बच्चों के लिए। स्कूल तो छोटा नहीं है, सीएमएस स्कूल तो बहुत बड़ा। स्कूल तो बहुत बड़ा है। वो शहर भी नहीं छोटा है, अब तो लखनऊ भी बहुत बड़ा हो गया। ठीक बात है। ठीक है, अब लखनऊ का पढ़ा हुआ है, बड़ा हुआ, अच्छी बात है। अच्छा लग रहा है। उनके पिताजी हमारे साथ हैं। सर, मेरी आपसे पहले भी बातचीत हो चुकी है, तब भी आप बहुत कॉन्फिडेंट लग रहे थे और आज भी बहुत कॉन्फिडेंट। और आज जिस स्कूल में आप उस बच्चे का हाथ पकड़कर छोड़ने आते थे, आज उसी स्कूल ने आपका स्वागत रेड कारपेट बिछाकर बैंड बाजे के साथ किया है। ये कितना गौरवशाली क्षण है? बहुत गौरवशाली है हमारे लिए। जिंदगी का सबसे बड़ा गौरव का दिन है ये। इससे बड़ा गौरव का दिन हो नहीं सकता। आपका गला रुध रहा है, आंखें भरी हुई हैं और गला रुध रहा है। बहुत ऊंचा पहुंचा दिया हमको, इस लायक मतलब हमको कर दिया कि दुनिया हमको देख रही बच्चे की वजह से। दुनिया आपको सुनना चाहती है कि वो शुभांशु जो भारत का मान और सम्मान बढ़ा रहे हैं, जो भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, 140 करोड़ लोगों की आवाज बनकर जा रहे हैं, उनके माता पिता क्या सोच रहे हैं? माता पिता बहुत अच्छा सोच रहे हैं। इसका मिशन अच्छी तरह पूरा होगा। हम लोग आशीर्वाद दिए, ईश्वर से प्रार्थना की है और सभी की दुआएं हैं उसके साथ। मिशन अच्छी तरह पूरा होगा। माँ से सुबह 2 बार वीडियो कॉल पे बात हुई, पापा से भी बात हुई, आशीर्वाद लिया? बिल्कुल आशीर्वाद। क्या कहा आपने? उन्होंने क्या कहा? बिल्कुल जाके मिशन पूरा करके आओ, मिलते हैं, फिर आपस में बैठकर बात करेंगे। तो उसने कहा ठीक। तो कुछ उनका स्पेशल खाना वाना बनवाने का इंतजाम है कि 14 दिन बाद तुम आओगे? क्योंकि बच्चों को माता पिता लालच देते हैं, ये काम करोगे तो ये खाने को मिलेगा। शुभांशु को क्या क्या लालच दिया गया है? खाने का तो कुछ खाता ऐसा नहीं है, मगर फिर भी वो जो है इतने प्रेम से मिलता है, इतना प्रेम है उसके साथ कि हम लोग तो यही चाहते हैं कि उसके साथ जितना समय व्यतीत करें उतना अच्छा रहता है। आप लगातार लोगों के टच में हैं। फाइनली वो घड़ी आ गई जब शुभांशु आज टेक ऑफ कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत खुशी का पल है हमारे सबके लिए। पूरे लखनऊ, पूरा भारत आपकी तरफ देख रहा है। आप लोग स्पेशल स्क्रीनिंग के लिए सीएमएस स्कूल में आई हैं, जहां से शुभांशु ने शिक्षा ग्रहण की थी। यहाँ पढ़ने वाले छात्रों के लिए भी बहुत गौरव का क्षण है ये। बिल्कुल, बहुत ही गौरव का क्षण है और हम सब इस समय बहुत खुश हैं और दुआ कर रहे हैं इस समय कि इसका मशीन बहुत अच्छे से सक्सेसफुल हो जाए। शुभांशु दूसरे भारतीय हैं जो इस तरह के अंतरिक्ष में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ये अपने आप में कितना गौरवशाली क्षण है और बहुत लोगों के लिए प्रेरणा के स्रोत बन रहे हैं वो। जी जी बिल्कुल, ये पूरे देश के जितने भी हमारे युवा हैं सबके लिए प्रेरणा का स्रोत हैं कि वो पहले भारतीय नागरिक हैं जो आईएसएस सेंटर पे जा रहे हैं। और इसके लिए इससे बड़ी गर्व की बात क्या हो सकती है हमारे परिवार के लिए। सारे युवाओं को इससे प्रेरणा लेनी चाहिए कि हार्ड वर्क का कोई ऑल्टरनेशन नहीं होता है। 14 दिन स्पेस में रहेंगे, बहुत सारे रिसर्च करेंगे और ये उड़ान जो है ये उन तमाम लोगों के लिए है जो छोटे शहरों में रहते हैं, छोटे स्कूलों में पढ़ते हैं, लेकिन सपने बड़े होते हैं। तो वो सपने साकार हो रहे हैं आज, ऐसा लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, उसने डे 1 से जब एनडीए में उसका एडमिशन हुआ था तब से ही उसने मेहनत करी है और उस मेहनत का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। उसने एक दिन के लिए भी मेहनत करना नहीं छोड़ा है। आज लगता है कि सारी मेहनत वो फल हो रही है। Remember viewers, Axiom-4 was a much awaited mission. Of course, we have reported multiple delays with different kind of reasons. Finally, we will be looking at a launch today with 90% favorable weather conditions for the same, with 4 astronauts on board, one of course being Indian, another one being from US, one Poland and also Hungary's representatives at the same time. Now the liftoff has been scheduled for around 12:01 p.m. as per the Indian Standard Time today. The docking will happen tomorrow. News9 will continue to track all the latest visuals as well as updates coming in with regards to the mission here for our viewers. Let's also speak about the mission and how the launch is going to happen from a couple of hours from now. The mission, if it goes ahead this time, will lift off from Launch Complex 39A at NASA's Kennedy Space Center there in Florida. The 4 astronauts on board set to go for the missions to the ISS will be carried aboard SpaceX's famous Falcon 9 rocket. They will be spending 2 weeks or 14 days precisely there in the space.
The launch date is of today's, which is June 25th. Mission is going to use SpaceX Falcon 9 from Florida, like we've mentioned already. The mission is also being led by NASA's veteran Peggy Whitson. Shubhanshu Shukla is going to pilot the mission. The crew on board is from India, US, Poland and Hungary. That's about the details as far as Axiom-4 is concerned. Let's also speak about the experiments that they are going to conduct. Muscle regeneration in microgravity being one of the aims. Sprouts and mung beans. The growth has to be noted there in space. Microalgae cultivation for oxygen as well as nutrition. Tardigrade survival in space. Human-tech interaction in zero gravity has to be reported as well. Shubhanshu will demonstrate yoga in space just like his idol did 40 years ago. A boost to India's space bioscience research on cards. Speaking about Shubhanshu Shukla's path to space, he cleared NDA after Kargil War inspiration. Then he joined Indian Air Force as a fighter pilot back in the year of 2006. He trained under Russia's Gagarin Cosmonaut Center. Then received advanced astronaut training in Bengaluru. He has been named as Gaganyaan astronaut in 2024. Then selected as pilot for Axiom Mission 4. He is the first Indian to reach International Space Station.